Hello everyone, this is Chaitali Chatterjee from Shriyam Communications and Solutions, which is media and communications partner for Yashashvi Awards. Today we have Advocate Suvarna Govil, who is founder of Yashashvi Awards. So let us viewers come to know about what is this awards about and how she has come to feel that let's do this awards. Yes, Advocate Suvarna, thank you so much for this opportunity to Shriyam Communications and Solutions, and I would like to congratulate you for your first season of Yashashvi Awards. Thank you so much, Chaitali. And I'm Advocate Suvarna Govil, and I was a corporate employee for like 14 years, and I understand there is a lot of struggle which a corporate employee faces in our daily routine. So when we were young, we used to pursue a lot of extracurricular activities, which slowly it just vanished, and we couldn't pursue it further. So these awards are to felicitate people who have been doing lot of extracurricular in their life apart from their daily course, and they are not being mechanical, and it's about felicitating their victory, their achievements in extracurricular activities. Like I know a lot of people who have done marathons, who have who are part of NGOs, who are doing lot of other things apart from their daily routine. So these awards are to felicitate them, and I must tell you, these are first of its kinds award in India, wherein we are felicitating salaried individuals at a national platform, and all the banks and insurance companies employees coming together on one platform. So Yashasvi is all about that. तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आज दिन भर में इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है एंड हु आर दी VIPs कमिंग इन. Ji. Chaitali, I must tell you, we have two slots wherein when we started doing the advertising for Yashasvi, so the entire focus was on banking, finance and insurance industry. And later on we started getting lot of inquiries from other sectors also, because as I told you, there are no awards for salaried individuals in India at a national level. So we thought of having a bifurcation. So we have two slots. One is banking, insurance and finance, and from 12:30 we'll be having open category awards. So that's the schedule for the day. And we have Miss Simran Ahuja, who has been Miss India 2013. She is a celebrity anchor for Filmfare, IFA, and recently she has got her best debut award. And we have Mr. Jaykumar Nair as the celebrity guest, who is the finalist of Dance India Dance, and he's also celebrity choreographer. We have Simran Gupta, who is an actress, and we have Miss Pallavi Bhushan Bhoir, who has been Mrs. Maharashtra 2020 for one of the pageants in Mumbai. So thank you, Suvarna, and she's wonderful. She's a very dynamic lady. We would also like to know more about Mark Preschool, which is your venture. Yeah, Mark Preschool, Kandivali East. I was always very fascinated about children getting better and good education, and the main purpose for having Mark Preschool was, we as a working mother, I always missed that facility of daycare, which is a good daycare for my children, yeah, for other working women. So we wanted to create a state-of-art daycare for working mothers' children, who can just leave their children at the daycare and be comfortable. So this is a preschool. It's a franchisee which I have taken, and looking forward to having a great year in 2021. So thank you, Suvarna. Thanks a lot, and wonderful, and all the best for Thank you this so event much, today. Aditi. This is your first launch event, Yes. and I'm best wishes for the entire year and for your vision. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. मैं बहुत बहुत खुश हूँ. आज ब्यूटीफुल संडे है, द 24th of Jan, और सवेरे सवेरे हम यशस्वी अवार्ड्स कर रहे हैं. तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी टू माय डियर फ्रेंड सुवर्णा गोविल, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया है ऑफ फेलिसिटेटिंग ऑल दोज कोरोना वॉरियर्स से लेकर जिन्होंने एक्सेल किया है इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द फाइनेंस सेक्टर, एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है इवन एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन और उसके पहले. अचीवर्स रहे हैं. सो हम सब का फ़र्ज़ बनता है टू अपलॉस फॉर देम एंड टू अप्रिशिएट देयर वर्क
टू एक्नॉलेज देयर वर्क, और यही यशस्वी अवार्ड्स पे हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इनॉग्रेटर हूँ यहाँ पर, और बस अब कुछ ही देर में हम इनॉग्रेट करने वाले हैं फंक्शन। यहाँ के जो नॉमिनीज़ थे, क्योंकि हम काफ़ी सारा बातचीत करते थे सुवर्णा के साथ, तो वो बिल्कुल बेमिसाल हैं। जैसे हमारे एक अवॉर्डी हैं जो प्रकाश गिरवानी जी हैं, वो जो काम करते हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, क्योंकि कोरोना ने ऑफ कोर्स हम सबको अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस दिए। जो डेड बॉडीज़ होते हैं जिनका कोई पता नहीं चलता है, और उनका पूरा सब कुछ उसके बाद जो देखना है, अंतिम संस्कार से लेके सही जगह पर सब कुछ करना, वो सब वो देखते हैं प्रकाश जी, और वो भी हमारे अवॉर्डी हैं। तो मैं सुवर्णा को बहुत कहना चाहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीटहार्ट, आप इतना खूबसूरत कार्य कर रहे हैं, और आपके सारे जो अवॉर्डीज़ हैं फाइनेंस सेक्टर से, उन सब ने भी अपने अपने तरफ से छोटा छोटा कार्य किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन यशस्वी अवार्ड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और यशस्वी अवार्ड में मुझे आना था, लेकिन भागदौड़ के तहत और कुछ प्रीवियस कमिटमेंट के तहत मैं वहाँ नहीं आ सका। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आग्रह करता हूँ कि आपका आशीर्वाद प्यार मेरे साथ बना रहे। यशस्वी अवार्ड में ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए हम सब यशस्वी रहे और यशस्वी अवार्ड का साथ हमेशा निभाते रहें। लव यू ऑल, जियो हज़ारों साल। मैं हूँ सुनील पाल। गॉड ब्लेस यू।